Yalamadab everyone and good morning. On behalf of Aga Khan Economic Planning Board for India, I welcome you all to this fifth session of Get Job Ready series. This COVID environment has got very different in terms of the way people interact, the way people are working. The job markets have also changed. A lot of people have started working from home. A lot of people lost their jobs. The traditional way of working is kind of going out. However, there has been very new opportunities that have come in. Initially, हमको लगता था कि जब हम हमको बड़ी cities में जाना पड़ेगा job करने के लिए and we have to move out. But COVID ने challenges के अलावा बहुत सारी opportunities भी दी है. One such opportunity or one such popular domain in the way of working in the job environment is gig. Uh, to talk about this gig, why not get the pioneers of this concept? So we have with us Sahil Sharma. He is an entrepreneur and co-founder of Gig India, a B2B gig marketplace for on-demand work completion at scale. Sahil has completed his bachelor's in computer science from Pune and has expertise in business development, marketing, and team building. To give you a perspective that how gig is so popular, in 2019, this was much before COVID times, YourStory.in recognized Gig India as one of the top upcoming Tech 30 startups. Personally, Sahil is a foodie at heart, and he also is very much interested in sports. So now that we have such a young and such a great person with us, let's not waste any more time, and I'll hand over the session to Sahil Sharma. A pleasure to be here with everyone. Broadly, we'll cover 7 points. I have a list of 7 points I'll cover today. First, I'll take you through the concept of gig. What does a gig mean? Second, the entire concept of gig economy, because recently there's a lot of talk about gig economy in the news. There are a lot of questions. What is it really? I'll take you through that. That's number two. Number three is why should you care about it? I'll try to convince you that if you are not aware of it yet, it might not be a very bad idea to start experimenting with it. So I'll tell you more about why you should experiment with gig economy. Fourth is if you are interested, how can you actually find a gig for yourself? Fifth is if you want to find a gig, what's the process that you'll follow? I'll take you through that. Sixth is if you want to make your profile on getting better gigs, getting better opportunities, how to do that. And finally, I'll just take you through some additional benefits plus some sense on future how gig economy looks like. So with that, we'll just get started. Number one is about gig. So आप लोगों ने काफी जगह पे सुना होगा कि if you have musician friends जो कभी कहीं पे in any hotel or restaurant they have a gig, which basically means that you if you have musician friends, they'll always tell you, hey, I have a gig in this place tonight. What they mean by a gig is that they've got that opportunity for that evening to go and perform there. Uh, so the word gig actually originated from that concept because a musician playing a gig at a particular place for a one evening is a temporary short term job. It's not a full time job, right? It's वो छोटा सा काम है, एक दिन का काम है, task है. That's why it's called a gig. Similarly, gig is nothing different in the professional world, in the world where we are. Is just is we define it as a short term job. So we all are aware how our families, how people around us have always worked in full time jobs, 5 days a week, 6 days a week, 9 to 5. Gig is different. You decide where you want to work, for whom you want to work, how many hours you want to work, do you want to go to the office or not, what will be your payment terms, when do you want to leave. Everything is flexible. So uh, temporary job, short term, is a gig, right? So that's where the entire concept of gig is all about. uh, what is the key difference between a gig and a full-time job? A full-time job means that you have to go to a specific place. I mean, of course, with COVID, we are all working from home, but pre-COVID, we had to go to an office.
work there from morning till evening, and eventually by the end of the month, we would have had our earnings in place. The key difference with gig is that first, you don't need to go to an office space. You will be assigned a task, a short term job. You complete it from, if it requires you to go to some place, I mean, to do that task, you do that. If it is possible to do it from your home remotely, you complete it remotely. And as soon as you complete it, you get paid for it, right? So that's the key difference. Number two is that in a full time job, you are contracted to a specific employer, so you can't you'll be only working with one company at a time. With gig, you can work with multiple companies at the same time, and in the truest sense, uh, it's even more secure. People might think that, hey, if I don't have a full time job, probably uh, I don't have job security. But as all of us are aware already, that last year a lot of us, our friends, our families, they lost jobs because of the pandemic, because of the consequences of the pandemic. uh, had we all been gig workers, even if there was a negative impact on one company, we would still have four other companies to work with. So I believe that the definition of job security is going to get changed with the concept of gig. Job security no longer would mean that you are stuck in one company with one job. It would probably mean that the more number of gigs you have, more number of jobs, higher the job security that you have, right? So broadly, that is what the gig is all about. Uh, Second, now let's talk about what is this all fuss about gig economy, right? Economy is nothing; it's just an ecosystem of buyers and sellers. Uh, so in terms of gig economy, let's say buyers would usually be uh, corporates, companies, small business owners, who want to give some work, who have some work but don't have someone to complete the work. They would want to buy someone's time to complete that work, right? Uh, and in this gig economy, the sellers are no one but people who are looking to work, people uh, who have the opportunity to sell their time, their skill set to a buyer who's seeking to get some work done. So gig economy is nothing just an ecosystem of buyers and sellers. Buyers are mostly business owners, businesses, corporates, and sellers are no one but just workers or people like you and me who are looking to do some work. Uh, the only difference is that in a usual marketplace model, a buyer would probably go and buy something from seller. Uh, Here, a buyer would give you a gig, which is a task to complete, or multiple tasks to complete. And as a seller, you will have to complete those tasks. And like in any economic marketplace or any economic model, uh, whenever you buy something, if you buy five things, you get paid for five things. If you buy, say, if the buyer wants to buy 100 units of your product, then you charge them for 100 units. Similarly, in this gig economy, the number of tasks that you complete, the number of units of work that you are able to sell, that's the amount of money that you can actually make. So I believe that the sky is the limit when it comes to gig economy. As long as you can keep growing your skills, keep improving your ability to deliver higher number of tasks in lesser amount of time, or uh, deliver higher quality of tasks in the same amount of time, uh, you will have enough growth potential in this economy. So that was one. Number two is a key question, I'm guessing, which must be popping up in your head right now is कि काम किस किस टाइप का हो सकता है, which all different types of jobs are there. मेरा तो ये पढ़ाई है, मैंने तो इतना किया है. Can I be am I eligible to do any kind of work in gig economy? So first of all, before I answer all those questions, let me tell you कि gig economy में काम किस किस टाइप का होता है. So let's assume एक स्किल का एक
scale meter है, या there's a range of skill level. It starts with low skill, no skill, जहाँ पे किसी को कुछ स्किल की जरूरत नहीं है. वो एक सेक्शन है जॉब्स का. सेकंड आता है मिड स्किल जॉब्स, जहाँ पे स्किल जरूरत है बट बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है. ऐसे जरूरत नहीं है कि आपको वो स्पेसिफिक स्किल की ही एक्सपर्टीज होनी चाहिए. एज लॉन्ग एज यू हैव सम basic communication skills, you should be able to do that job. That's the mid skill section. And the third part in the gig economy is the high skill section, which we usually call them as white collar jobs, जहाँ पे आपको expertise चाहिए. जैसे अगर मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो मुझे कोडिंग तो आना चाहिए, उसके बिना तो मैं नहीं कर पाऊंगा. वैसे ही there are a lot more other jobs in the white collar space um, where you need higher expertise and you need higher set of skills. So to answer question, अगर किसी के मन में आ रहा है कि किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, सो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज की जॉब्स आपको मिलेंगी. नंबर 1, जिसमें कोई स्किल या लो स्किल चाहिए. फॉर एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ गिग वर्कर्स टुडे हु ड्राइव कैब्स, डिलीवर फूड, and all that you need to know to do those jobs is either you need to know how to drive a cab or you need to know how to drive a bike. As long as you can do that, you can do these jobs, right? So we are all aware of this model. So that's number 1. In the mid skill section, you would find players like my company Gig India. There are other players which are operating the same section. Some people are saying write content, some people are saying share content, some people are saying create videos, we are saying make calls. So different types of jobs, but again, you don't need a specific education degree. So at Gig India, specifically to our platform, आप बीए किया है, आपने सीए किया है, आपने आपने सिर्फ 12th पास किया है, आप आपने कंप्यूटर साइंस किया है, इंजीनियरिंग किया है, जो भी आपने किया है, as long as you know how to make a good call, you have command over your communication skills, you can do any kind of job which Gig India has. Similarly, in all the other mid skill platforms, आपको as long as आपका basic उसमें स्किल सेट होगा तो आप वो जॉब्स कर सकते हो. आपको स्पेसिफिक किसी डिग्री की जरूरत नहीं है. एंड फिर फाइनली जो थर्ड सेक्शन आता है वाइट कॉलर जॉब्स, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक स्किल सेट की ज़रूरत है. उसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हो, किसी को ऐप बना के देना चाहते हो, तो आपको आना चाहिए ऐप बनाना. And for that you'll need to have had taken um, some expert training in the past, be it in the form of a formal degree or say some course in any of um, these institutes which are there. So that's number 2. uh, a question that must be also coming through is, do I need any educational degree? Do I need any specific um, domain expertise to be a part of gig economy? No, you do not need to. Yes, higher the expertise, better the job, better the pay. But I mean, some of us have certain limitations. We have certain degrees which we have taken in the past, but you don't need to. Your potential is not judged basis that. Your potential is purely judged basis what level of skill you have, right? So that's number 2 point. Now coming to third point, which is, why should you care about gig economy? Why should you even consider it? Why should you not do what our families have been doing for so many generations, which is work for one employer for their entire lifetime and have a fixed income, right? Number 1 is flexibility. हम सब ने देखा है, हम सबकी फैमिलीज में, स्पेशली जिनके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स स्पेशली किसी गवर्नमेंट जॉब में थे या किसी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में थे, वी वुड ऑलवेज कंप्लेन टू आवर पेरेंट्स कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको कब काम पे जाना है, कब आपको काम से वापस आना है. जब बॉस बोलेगा या जब कंपनी बोलेगी तब जाना है, राइट?
बट गिग इकोनॉमी में यू आर योर ओन बॉस. यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. आपको कब स्टार्ट करना है, कब रोकना है, आपको कब काम नहीं करना है, आपको कब छुट्टी चाहिए, आपको, आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है. आपको सुबह के टाइम पे काम करना है, आपको, यू आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग एट द नाइट. It is completely your decision. You have the entire flexibility to make your own decision, to decide your own hours, right? uh, हमने देखा है कि हमारे मॉडल से बहुत सारी होम मेकर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है. Especially homemakers who are newlywed. Probably they have a small baby at their home, and they might have some additional responsibilities as well. So, I mean, asking a woman to also take care of the baby, also take care of her other responsibilities, and also go to work all 8 9 hours is an unfair thing. So a model like Gig India, it helps homemakers uh, manage their personal plus professional lives better. We have a lot of homemakers on our platform who decide their own hours, decide what they want to work on, and then they work on it, and then they get rewarded similarly about, with respect to whatever amount of time, amount of tasks that they complete on a platform. That was just one example. Second example is students. जब मैं कॉलेज में था, मुझे याद है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉकेट मनी आती थी, एंड उसी में पूरा महीना निकालना होता था. एंड देयर वर टाइम्स व्हेन you needed extra money, you wanted to say gift your friend something, or you wanted to give a treat to your friends on your birthday. Of course, asking for more money from your parents is not possible in all cases. Was not possible in mine. So we, of course, we had to ask, we had to do figure out something how to make more money. And I wish there was something like Gig India before, because if there had been, I would have used the app and made additional income. But today we have a lot of students across India who use our platform to generate that additional amount of income, to either pay for their extra courses they might be doing, or just to have access to better college life. So I mean, that is second category. Third is uh, a lot of job seekers. अभी जैसे हम सबको पता है job market थोड़ा सा, it's a bit stingy right now. We were not getting jobs very easily. So a lot of these job seekers say, if they are trying to look for a job, किसी को job ढूंढ रहा है, कोई ढूंढ रही है, 6 8 महीना हो गया नहीं मिला है job. So while you're searching for your job, you can log on to any of these platforms, keep doing some work, right? Have some amount of income flowing in your bank account every month. It may not be so steady, it not may be as high as it was before, but at least it will supplement to whatever you have, right? So in those cases we have a lot of job seekers as well. So अगर आप में से कोई भी होम मेकर है, आप में से कोई भी स्टूडेंट है, फ्रेश ग्रेजुएट है, आप में से कोई भी जॉब सीकर है, तो आपके लिए तो गिग इकोनॉमी इज द परफेक्ट थिंग राइट नाउ. एक और एग्जांपल है ऐसे लोगों के लिए जो, जिनके लिए गिग इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो है पीपल हु स्टे इन रिमोट एरियाज. अभी काफ़ी टैलेंटेड पूल है इंडिया का, मैक्सिमम टैलेंटेड पूल इंडिया का रिमोट एरियाज में है, Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में है. अभी क्या होता है, अगर किसी को अच्छी जॉब चाहिए तो दे हैव टू मूव टू अ Tier 1 सिटी, विच इज़ दे प्रॉब्ली मूव टू मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पूना, चेन्नई, हैदराबाद. They move to these cities to find job. Of course, when you move to these cities, one, you are away from your family. Second, you will incur additional cost. But with the gig economy, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. आप जहाँ पे भी हो, आप वहीं से काम कर सकते हो, किसी के लिए भी काम कर सकते हो, and you will make equivalent amount of money. In fact, you will end up saving a lot more than what you would have saved when if you would have moved to a Tier 1 city. So that's why I feel that that's why you should care about gig economy. The first entire point was around flexibility. Second, in gig economy, especially at Gig India, I don't know about other platforms, but I've noticed that across
Gig economy, we've seen this as a common trend that we prefer skills over your past experience or your education. Honestly, we don't even care about it. As long as you can do the job, as long as you can, for us, make the call, irrespective of where you come from, who you are, what degree you have, as long as your background check is clear, right? Then that's fine. But other than that, wherever you come from, whatever degree you have, whichever area you stay in, it doesn't matter to us. What matters is, can you make that call good, right? Similarly, there will be other platforms which will probably not care about any of the other things, and वो सिर्फ आपसे पूछेंगे आपको डिज़ाइन करना आता है क्या, आपको कॉपी राइटिंग आती है क्या, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स वेट करने आते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल. So they will not care about which degrees etc you've had. So that's the second benefit I feel, कि काफ़ी टाइम लोगों को लगता है कि मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई नहीं की तो मुझे उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, एंड वी फील बैड. आई हैव बीन एट दैट प्लेस माई सेल्फ. But I feel that gig economy is kind of, it's kind of democratizing employment opportunities, कि अभी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास स्किल है, आपको जॉब मिल जाएगा. आपके पास स्किल नहीं है, irrespective of you're from the top university in the world, you still not get a gig on any of these platforms. So that's number two. Number three is, like I said, you can work from home. I've already covered that point. And the best part, which I feel, which currently is not realized right now because अभी scope छोटा है, जो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात गिग इकोनॉमी के बारे में ये है कि आप दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हो. आपका स्कोप अभी सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं रहने वाला है. विद गिग इकोनॉमी यू कैन वर्क फॉर एनी कंपनी अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि रिमोट वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, कंपनी कहीं से भी काम दे. हमें ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया से ही होने चाहिए. आप दुनिया की किसी भी कंट्री से काम कर सकते हो, किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हो. उसमें बेनिफिट दोनों का है. बाहर की कंट्रीज, if they they're always looking for the powerhouse that India has. They're always looking for Indian talent. Earlier they were limited to options of people who used to come visit their countries to do those jobs or go study there, but now they are looking for such platforms where they can provide opportunities to people right there and there in India itself. So I feel gig economy is going to fast track that process where global demand is going to come to Indian supply. So yeah, those are exciting times ahead. That's why I feel if you want to really try it out, try it today. आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये मॉडल समझने में. जब तक आप मॉडल समझोगे तब तक हो सकता है काफ़ी और अच्छी चीज़ें, काफ़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हो मार्केट में, एंड आपको उससे और फ़ायदा हो सकता है. So that's number three. Number four is, अभी assuming I have been able to convince you to try gig economy. I've been able to convince you to complete a gig. How do you find a gig? आपको कैसे मिलेगा? How to get started? So another good thing about gig economy is that it's kind of, it's of course it's privatized. There are a lot of players, काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो ये काम करते हैं. हमारा काम सिंपल है, हमें कंपनीज के पास जाना है, उनसे काम लेना है और हमें ये काम आप लोगों को बांटना है. सो सिर्फ गिग इंडिया नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर रियली अमेजिंग कंपनीज इन द मार्केट which are doing this job, which are going to large corporates or going to business owners and telling them अगर आपके पास कुछ काम है तो हमें दो, हम ये काम सही कैंडिडेट को बांटेंगे एंड वो आपका काम कंप्लीट करके हम आपको वापस दे देंगे. So if you're asking how to find a gig, I would say don't find a gig, find a gig platform. Find a gig platform that suits you. Every gig platform will have its own expertise. कोई कंटेंट का होगा, कोई सपोर्ट का होगा, कोई सेल्स का होगा, कोई टेलीकॉलिंग का होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा. आप उसको ढूंढो जो आपके स्किल सेट को मैच करता है. वीडियो एडिटिंग होगा, देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म ऑल्सो. जो प्लेटफॉर्म का स्किल रिक्वायरमेंट आपके स्किल से मैच होता है, उस प्लेटफॉर्म को आप ढूंढो, उस पे जाके आप रजिस्टर करो, फिर आपको गिग्स की बिल्कुल कमी नहीं होगी.
वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप खुद से ट्राई करें गिग्स ढूंढने का। उसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। बट हाँ, वहाँ पे चांसेस कम होंगे बिकॉज आप खुद से ट्राई कर रहे हैं, शायद लोग इतना इंटरेस्ट ना दिखाएं क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। बट अगर आप प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं, जैसे जो लोग गिग इंडिया के थ्रू आते हैं, उन उन उनको काम दिलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपना काम करना पड़ता है, हमें कंपनी से बात करके उनसे काम लेना पड़ता है, ये हमारा काम है। सो आपको काम की कभी कमी नहीं होती है। सो बट हाँ, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। आप प्लेटफॉर्म्स ढूंढ सकते हैं जो ऐसे जॉब्स देते हैं, ऐसे गिग्स देते हैं, या फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अभी अज्यूम कर लेते हैं कि आपने एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया है। दैट ब्रिंग्स मी टू माय फिफ्थ पॉइंट कि वंस यू फिगर्ड आउट द प्लेटफॉर्म दैट यू वांट टू वर्क विद, how to ensure that you leverage that platform the best? How do you ensure that if there is a good gig opportunity on that platform, it should only come to you, not only to you, but you should be selected for it? ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने अप्लाई किया, आपने अपना पूरा बेस्ट दिया और फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हुए, राइट? सो अभी मैं आपको एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगा जो आपको बताएगा कि यूजुअली अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट आर 5 steps दैट यू विल usually go through. It might differ, these names and nomenclature might differ from platform to platform, but broadly हर प्लेटफॉर्म पे यही होता है। ठीक है, सो मैं पहले 5 स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ, फिर मैं आपको हर एक प्रोसेस के स्टेप का ये बताऊंगा कि आपने बेटर कैसे करना चाहिए। सो 5 जो स्टेप्स हैं, पहला है एप्लीकेशन प्रोसेस। हर प्लेटफॉर्म का एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। आपको स्टेज 1 पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ये वो एक उनके एंड्रॉयड फॉर्म के बेसिस में हो सकता है, या फिर उनकी वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, या फिर कोई आपको कॉल करके कुछ पूछेगा। बट स्टेप 1 हमेशा एक एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। स्टेप 2 एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, हर प्लेटफॉर्म आपको बोलेगा ये करो वो करो, टू ensure whether they can select you or not, whether you are a right fit of for the kind of jobs they have or not. So that is a selection process. Second, third is we call it as certification process. अगर एक बार आपको select कर लिया, आपको इतना एक्सपर्ट बना देना उस चीज़ में कि आप फिर कैसे भी टाइप का काम कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें ये प्लेटफॉर्म्स आपको ट्रेन करेंगे कि आपने अगर ये काम करना है तो कैसे करना है। ठीक है, एंड फोर्थ है, आप जब एक बार सर्टिफाई हो जाओगे तो आप लाइव चले जाओगे, यू विल गो लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म, विच मीन्स यू स्टार्ट वर्किंग, यू स्टार्ट गेटिंग gigs, and eventually last step is getting paid for the work that you do, right? So these are 5 steps. आप अप्लाई करोगे, सिलेक्ट करोगे, सर्टिफाई करोगे, सर्टिफाई होगे, काम स्टार्ट करोगे, और यू अर्न योर livelihood. Now these are 5 steps. Now I'll tell you how to do these 5 steps properly. किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे, अगर आज आप इस वेबिनार के बाद कहीं प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई करोगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आप अभी मैं आपको बताऊंगा। सो पहला, how to how to make your application stand out. See, any of these gig worker platforms, they're always looking for people who can work flexibly. अगर आप बोलोगे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में कि नहीं, मुझे तो 10 hours का तो वर्क चाहिए ही चाहिए, मुझे तो सुबह 8 से शाम के 5-6 बजे तक काम चाहिए चाहिए, दे माइट नॉट प्रेफर यू। सो आई वुड सजेस्ट दैट आपने ये बोलना चाहिए कि आई एम फ्लेक्सिबल फॉर द नंबर ऑफ आवर्स। आपके पास जितना डिमांड है मैं उतना लेने के लिए रेडी हूँ। आई एम फ्लेक्सिबल। यू शुड, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट योर एप्लीकेशन शुड कम आउट एज that you are okay with flexible hours, flexible amount of work, kabhi kam zyada, you're okay with that. But if you're going to show in your application ki nahi, I only want fixed income, I only am looking for a fixed job, then you are looking for then you're on the wrong platform. ठीक है, so number 1. Number 2, in your application process try to showcase आपका skills क्या है, आपका पहले का डिग्री क्या है, अगर है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो उसके बारे में बताओ। आप एंड ये सब चीज़ें आप थोड़ा आपके बारे में बताओ, सो दैट
इससे ये समझ में आ जाए कि एक तो ये फ्लेक्सिबल भी है एंड इसके पास रेलेवेंट स्किल सेट भी है जो हमें चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपको ये बताना है कि आप कहाँ, आपको आपके सारे जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो एक प्लेटफॉर्म को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हो, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। मैं अभी गिग इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, बट शायद हर प्लेटफॉर्म की अलग होंगी थोड़ी। सो आपको उसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे फैक्चुअल डेटा में, तो एंड बाद में अगर प्लेटफॉर्म को पता चलता है वैसे नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। सो आप अगर किसी एक अच्छे जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो आपने उसमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए, सो दैट the people who are vetting your profile can actually take an informed decision. Else if they get to know later, then you'll automatically be rejected. So ये आपने ध्यान रखना है एप्लीकेशन प्रोसेस में। नंबर 2, सिलेक्शन आपका कैसे आप बढ़ा सकते हो। सिलेक्शन में मोस्टली ये प्लेटफॉर्म्स आपको बोलेंगे ट्रायल टास्क करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कुछ कॉल्स करने के लिए, कोई कंटेंट वाला बोलेगा कि आपको थोड़ा कंटेंट लिख के दो, कोई ये बोलेगा कि आप हमें कुछ डिज़ाइन बना के दो, कोई बोलेगा ये वीडियो एडिट करके दो। सो हर प्लेटफॉर्म आपको कुछ ट्रायल टास्क बनाने के लिए बोलेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये ट्रायल टास्क कर रहे हो, आपने कुछ इंटरनेट से कॉपी नहीं करना है, बिकॉज ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स हैव मैकेनिज्म्स टू चेक वेदर आपने कॉपी किया है कि नहीं किया है। तो बस आप अपना जेन्युइन बेस्ट दो उसमें, आपने आपको जितना आता है आप उतना अच्छे से करो, बट कॉपी आप करोगे तो डायरेक्टली वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स नंबर 2। सर्टिफिकेशन में इसमें इसलिए मैटर करता है कि एक बार आप सीख गए तो आप वो जॉब बेटर कर सकते हो। फोर्थ इज, जब आप एक बार लाइव जाते हो प्लेटफॉर्म पे, हमेशा आपका जो आप इनपुट दे रहे हो वो मैक्सिमम रखो। आपका जो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन वगैरह, जो भी क्वालिटी मेट्रिक जो भी है, उसको आप ध्यान में रखो। और थर्ड, आपका बिहेवियर ठीक रखे हो। जैसे अगर आपको बोला गया है कि अगर आपने बोला है कि मैं 8 से 12 ही काम करूंगा या करूंगी, तो आप 8 से 12 ही काम करो। आप 8 की जगह उसको 10 मत बजाओ, या 12 की जगह उसको एक्सटेंड मत करो। वॉट एवर यू सेड, stick to that. So that's how you get the process right. Coming on to next part, which is profile. हर प्लेटफॉर्म का एक ट्रस्ट स्कोर होता है जो ये ट्रैक करता है कि आप कितने अच्छे गिग वर्कर हैं, कितना आपको एडिशनल आगे दिया जा सकता है काम। सो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने ऐसा कुछ काम नहीं करना है उस प्लेटफॉर्म पे जिससे आपका ट्रस्ट स्कोर कम हो जाए। आपने कुछ चीट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। आपने कुछ समटाइम्स वी ऑल ट्राई टू मेक सर्टेन शॉर्टकट्स, डोंट डू दैट, बिकॉज दीज आर ऑल टेक लेड प्लेटफॉर्म्स, दे अंडरस्टैंड इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। सो जस्ट कीप इट क्लीन, कीप इट सिंपल। जितना है जो है आप वैसे रखोगे तो आपका ग्रेजुअली ट्रस्ट स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। एंड ट्रस्ट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है? जितना आपका ट्रस्ट स्कोर होगा उतना आपका अर्निंग पोटेंशियल होगा प्लेटफॉर्म पे, उतना ही क्वालिटी जॉब्स वो आपको देंगे। बट अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए, छोटा मोटा थोड़ा और अर्निंग्स के लिए आप कुछ शॉर्टकट ट्राई करोगे या आप कुछ गलत चीज ट्राई करोगे, उससे आपका ट्रस्ट को नीचे हो जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाएगा कि वो प्लेटफॉर्म आपको फिर कभी अच्छा जॉब नहीं देगा। ठीक है, सो आपने ये ध्यान रखना चाहिए, ट्रस्ट स्कोर। दिस इज माय 6th पॉइंट। माय लास्ट पॉइंट इज एडिशनल बेनिफिट्स। whenever you're joining a platform or you're selecting between platforms, ask them if they have any insurance policy in place for gig workers. If they have, sometimes I've seen some additional incentives being given out to gig workers. Some platforms have proper upskilling sessions for the gig workers. So आपने ये सब additional पूछना चाहिए। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे ये सब है तो आपने उस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स। So that's it from my side. But Samir from my team will continue the session. He will be here answering any questions if you have. I'll answer some questions if you have. But that's all from my side. I hope this helped you. They're asking how to find gig platform. How to find a gig platform? Like I said, जैसे अगर suppose मुझे वीडियो एडिटिंग आती है और अगर मुझे वीडियो एडिटिंग का प्लेटफॉर्म ढूंढना है, तो मैं सिर्फ गूगल पे जाके करूँगा वीडियो एडिटर फ्रीलांस जॉब्स, या फिर मैं गूगल करूँगा वीडियो एडिटर गिग जॉब्स। जैसे ही मैं करूँगा आपको काफ़ी सारी जॉब लिस्टिंग्स आ जाएंगी, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की होंगी। आप फिर उस पर हर एक प्लेटफॉर्म पे टैप करो,
जाके देखो कि वो प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है उस पर अप्लाई करो. Thank you so much, Sahil. I know you had a personal exigency, but you still kept up to the commitment and came for this webinar. Thanks a lot. So this shows the passion with which you've worked, with which you are working with Gig India. We are so fortunate to have you. Thanks a lot, Sahil. It was a pleasure having you on board. And as you said, we'll hand it over to Samir Saurav. Samir heads the marketing at Gig India. So Samir will kind of continue from here. Thank you so much, Sahil. Thanks a lot. So I can see a couple of questions. What is the work? Person has asked what is the kind of work we get. As Sahil mentioned, there are multiple jobs available in market on different gig platforms. If you are design person, if you are inclined towards copywriting, content writing, or if you are into sales marketing, all types of gigs are there. Specifically talking about Gig India, we are into telecalling roles where telecalling can be leveraged for multiple domains for sales, marketing, customer support activities, and inbound, outbound call, appointment scheduling for different industries. Right? So with us, you can get those kind of gigs. So if you're interested, if you are confident that yes, you have that kind of communication skills, if you want to work on customer focused roles, right? You can, if you can interact with customers on a daily basis, work for large B2B, B2C brands, then you can always try Gig India. So our Gig India's website, you can go through that to learn about what is gig economy, how it works, how Gig India assists you in getting jobs, getting gigs. That is the place. If you are looking for, if you are clear that yes, I want to apply to roles available on Gig India app, here is the link for Gig India app as well. So you can straight away go to the app, create your profile. As Sahil mentioned, be genuine when you are submitting your applications and when you are submitting your information about yourself. Be genuine. It's not about you being very skilled because as Sahil mentioned this as also, we work in a mid-skill segment. So we want people who are willing to contribute in terms of their effort with bare minimum skill, that is communication skills. That is all for us. Just show us that. No need to no need to lie about anything. Yeah, the second question, Seema Kotadia. She has asked, how can we apply of this? See, it's very simple process. You go to Play Store, download the app. Okay. Download the app, create your profile. There's the option to sign up. While signing up, you will get a couple of questions, very basic questions. Answer those, and then there will be you will see multiple gigs available. Okay, choose whatever gig you want to work on. Apply to that. Again, there will be some questionnaires specific to that gig. You can create audio, video, and written round. There are 3 rounds, I think 3 rounds and 2 rounds for some of the gigs. You can complete those rounds and then we will evaluate. We'll get back to you accordingly. So I've shared 2 links. One is the website where you can read about Gig India, what kind of role we provide, what are the career advancement opportunities which we provide, what is the process to apply. Everything is available on website. You can and to start working with Gig India, you can go to our app store on Play Store, and there you can find the app. I have shared the link for that also. I am a student and I wish to work part-time, but there are openings for people who can work full-time. How to find part-time work? So as I mentioned, as Sahil mentioned, right, when you are applying for any gigs, be very sure about it that every gig, every project has different requirement. What do you mean by part-time? I'm not sure about that. If you mean just that you will contribute, you can be available for 1 or 2 hours. Probably you are looking for very different kind of gigs. That may be some of content writing or something. With our kind of gig which we provide, usually it requires 6 to 7 hours of your daily effort. But not straight away. There is no fixed timing, so you can find out 6 hours, 7 hours for yourself anytime in a day. Whenever you can log in, just log in. You have targets for yourself. You just complete your work, submit it on the platform itself, and then we'll assess those work. How is the issue resolution process between buyer and seller? So Gig India is the intermediary. How it is different from any other freelancing model in traditional freelancing model is earlier what used to happen, buyers used to directly engage with the sellers. So suppose if I am a company X, I want content writing to be done. I have given that project to you as if you are a seller or if you are the gigger, right? If you want to do content writing, I'll be monitoring your work. But then there used to be lots of issues.
right? Because of time constraints with the managers also from the company, their representatives did not have much of the time. With Gig India, how we are assisting here is that we are intermediary between the sellers and the buyers. So we make sure that whatever issues you are facing on a day-to-day basis, we solve those issues for you. At the same time, whatever is the expectation from the enterprises, the customers, the buyers, we resolve those issues also for them. So you don't face such problems with us. Legality of working with various platforms. Thank you, Amin, for raising this point. It's completely legal. It's legal because as a gig worker, you are flexible. You are free to work for as many enterprises as you want. Whatever projects you want to engage on, be it for Gig India or any other platform, you are free. The only thing is it is a quality-based model where you are expected to deliver your work on time and as per of the highest quality. So if you can manage yourself to work on multiple projects, maintaining the good quality, that then the legality is not a challenge. Can we do gig work while working a full-time job? Thank you, Sharvari, for raising this. Yes, you can, of course, as I mentioned earlier also. You are absolutely free to work on gigs. If you do not have any terms and conditions uh, provided by your full-time employer, if you have signed any contract, if you in your JD explicitly mentioned that you cannot engage with any other gig platforms or any other employer, then you cannot. Otherwise, you can. Most of the companies do not put such conditions. I had simultaneously made many accounts on Gig India, but I am unable to add my skills over there as it just asked for languages. Also wanted to know how we do freelancing as I'm interested in. Yes. So as we mentioned already, the primary skills which is required to work on Gig India platform, that is the communication skills and your communication skills and your persuasiveness, understanding of the domains or industry. If you have those things, we do not require anything specific as in any technical skills as such. So that is why there is no question. As and when we get new gigs, if anything new comes up from technical point of view, you will have forms. We will gather those inputs from the app itself. How gig platforms are different from freelancing platforms like Upwork. Thank you, Hushan. I cleared that just a minute back also. It's different from Upwork because on Upwork, you are on yourself. You are managing your work on your own. Your work is being reviewed by the buyers directly, the companies. And if they do not like your work, probably they are not going to give you any other assignment. Whereas with Gig India, it's not the case. We are managing you on high level. We are taking work from the customers. So we are distributing it among different giggers on basis of their skill set, their performance, right? So we maintain that balance. We make sure that you always keep getting jobs for yourself so that you earn as much as possible. Are these shift-based telecalling? No, as of now, we are operating in Indian time, but yes, as Sahil mentioned, limitations are like there's no limitation. Very soon we are going to get global brands also on board. In that part, when you're working for US-based companies or Europe-based companies, at that time would be requiring for different time zones, right? So that is where. But right now it's mostly Indian timing, and that also it is very flexible. You can work on your own time. So you can start early in the morning, or you can start in the afternoon, or you can start in the evening. That's not a problem for us. I am disabled. I need to do work from home. So can you suggest some work? Yes, we would be. Hi, Khairunisa Pirani. Good to have you on the platform. And trust me, we are very keen. We are very outgoing in terms of helping out people who are underprivileged in any terms. If it's a disability also, we do not have any constraint as such. We would be more than happy to help you with the opportunities. Reach out to us, apply on the job. We'll reach out to you. Is there any registration fees? Ronak asked. No, there is absolutely no registration fees. If anybody asks you in the process, please be aware none of the gig platforms are supposed to take registration fees as such. If there are some platforms who are looking for some technical roles, some platforms like Fiverr, Upwork, their business model itself is very different. We are in managed workspace. There's no fees. There's no registration fees. It's absolutely free for you. Jasmine asks, can you share once again what kind of jobs are available? You can download our app. You can see there are multiple jobs available. For us, it is mostly sales, marketing, and customer support because we are in business professional space.
So we work with clients. You work with India's best brands with us. Customers like Paytm, Amazon, Reliance Group, Tata Group. You will get those projects from us. Pharmacy, Cred, all these brands are there, so you can get roles from there. How are we paid and what salary to expect? You can earn on average, people are earning up to 20 to 25,000 on our platform, anything between 15,000, 25,000. But if you are really good, there are people who are making even 1 lakh per month. So that's not a problem. But yes, we don't boast that much. It's like 15 to 25,000 is the average income made by any gigger on the platform. And you get paid on a monthly basis. You would get it credited to your account directly. When we onboard you as a gigger, we do your KYC, we take your bank details and everything. You get your earning at the end of the month. And we are very prompt about this, the payments and all. You get it on time. There are many platforms like freelancers who encourage first to do some initial investments like boost your profile by attending a such training. No, we do not take any charge for training as such. Once you are selected on basis of assignments you have submitted on the platform, once we recruit you, once you finalize your candidature, after that you go through some initial period of training program. It might be of 1 week, 2 weeks, and once you are trained and certified, then we onboard you on the platform for the actual project. If I have gap year due to family responsibility, can I join as a fresher or my previous experience will be counted? Absolutely. You are free to apply. If your experience that comes handy for your performance. As I said, for us, the bare minimum experience is your communication skills, your industry know-how. Even if you don't have industry know-how, your eagerness to learn, because we provide training. So if we find your interpersonal skills, your communication skills apt, we recruit you and then we provide training. If you have previous experience, that will come handy, as your training period can be shortened because of that. So, and you can perform very well. You can earn more than average if you have experience. Can these jobs be performed in weekend basis? For now, no. Most of the gigs which are available on the platform and on today's date, most of them expect you to be available in weekdays from Monday to Friday, but weekend support is not available right now. For Sundays, it's not. No gig is available. I downloaded gig on app and I apply, but the result that I get only the job about related to sales. Yeah, as I said, it's mostly telecalling based jobs available on our platform. Mostly sales, marketing, and customer support activities, customer engagement. And there are then subgroups, subcategories. Like if you are doing sales, it can be initial sales calls. Sometimes it's a closer of sales call. Sometimes it is customer onboarding, customer activation. So those are different verticals of sales. So need not at all. It need not to be always that you have to sell product or take payments from the customer. Sometimes it's a customer onboarding where you just have to provide the demo of the platform. Say if you're working on a Cred, right? So you have to tell customers how they can create their profile on Cred, how they can create their account, how can they start working with the Cred. Those kind of details. Those kind of activities you can do. What kind of projects are there for finance people? I mentioned on Gig India, there is no finance related jobs, but there are portals, there are gig platforms other than Gig India, which provide such finance related roles also. You need to search, you need to be proactive, go to Google, search those platforms and apply. What kind of jobs includes in mid-skill category? Thank you, Mubarak. As I mentioned earlier also, in mid-skill, when we say mid-skill, it's basically that we do not need you to expertise in any technical skills. If you are 12th pass student, if you are graduated, right, if you have completed your post graduation and you are confident, you are professional, you have work ethics in place, then you can work in the roles on Gig India platform. That is what we mean by mid skill. There is no specific training as such required, specific course required to excel on the platform. Amin Merchant asks, how is the measure of success defined between buyer and seller? So measure of success, it's for buyers, it's always the work delivered on time and the quality is the success measure for them. For sellers, it is the kind of expectations which was set by the buyer or the platforms like Gig India. Where you able to deliver that on time, where you achieved those KPIs for yourself or not. If you have achieved, you are successful, you get paid accordingly. Who comes from the quality of work, Gig India or the buyer? So for you, with Gig India, it's Gig India which determines the quality, because we have automated quality checks. There are different automated processes in between which evaluates your work.
You mentioned before for video editing, so we edit video at any of, or they have their own. Sirajuddin, we do not provide video editing kind of gigs, so probably you will have to check this with the platforms which do. I think there's just one question. Can a retired person, well experienced, also work on Gig India? So, Sameer, is that possible? Do you have an age limit? No, absolutely not. As I said, there's no strict restrictions. Anybody who is committed, who is determined to work from home for 6 to 7 hours per day on gigs, to work flexibly on their own terms, who are willing to work on customer domain, interacting with the end customers on day-to-day basis, right? They are open. We are happy to onboard you. So for you guys, we have a couple of testimonial videos where people have talked about their experience of working with Gig India. How did they find about Gig India? Like you guys are finding about Gig India on this webinar. Similarly, they found out about Gig India through some different channels. Once they understood the platform, they explored it, they found the job. Hear it out from themselves. हाय, मेरा नाम आशा है और मैं 22 इयर्स की हूँ। बेसिकली मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और मैं जो हूँ, मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। मैं सेल्स के फील्ड से ही रही हूँ और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। इवन मैं हमेशा अच्छी जॉब की नीड थी मुझे। मैं हमेशा अच्छी जॉब सर्च करती थी जहाँ पर मैं सेटिस्फाइड होकर काम कर सकूँ और जहाँ मुझे काम करने में अच्छा लगे। एक दिन मेरे फ्रेंड प्रतीक ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझे बताया कि गिग इंडिया ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकती हूँ। तो मैंने उसके कहने पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट की और क्रिएट करने के बाद मैंने अप्लाई किया। फिर मुझे रोहित सर ने कांटेक्ट किया एक प्रोजेक्ट को लेके और वो बहुत ही मतलब मेरे को एप्लीकेशन के बारे में बताया, एप्लीकेशन को कैसे चलाना है या कैसे यूज़ करना है, एवरीथिंग उन्होंने मुझे ट्रेनिंग में सिखाया। लेकिन देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छे हैं और मेरे आइडियल भी है क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी कुछ सिखाया। उन्हीं के साथ साथ सेम उन्हीं के नेचर के आशुतोष पालसुले जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनके साथ भी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी हूँ। ऑलरेडी मैं 1 साल से गिग इंडिया के साथ काम कर रही हूँ। मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करती रही हूँ। तो कभी मैं रोहित सर के साथ, तो कभी मैं आशुतोष सर के साथ, तो कभी गोविंद सर के साथ। काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं और आशुतोष सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता था कि मैं टेक्निकली कभी कोई चीज़ें कर सकूँगी। उन्होंने ट्रेनिंग भी दी बट मुझे कभी नहीं समझ में आया। फिर वो मुझे स्पेशली गूगल मीट के थ्रू मुझे फिर से समझाते एवरीथिंग। वो इरिटेट भी नहीं होते कभी मुझे, मतलब हर चीज़ छोटी से छोटी मेजर से मेजर चीज़ वो मुझे सिखाते थे। तो ये दोनों लोग ही मुझे बहुत, मतलब मैं इन दोनों ही को अपना आइडियल मानती हूँ क्योंकि जब कोई आपको कुछ सिखाता है और समझाता है तो एक तरीके से वो आपका गाइडर है, तो वहाँ पर वो आपके लिए आइडियल हो जाए अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद मेरे को गिग इंडिया में काम करके काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को काफ़ी अर्निंग मिले यहाँ पर, काफ़ी कुछ मेरे स्किल्स इम्प्रूवमेंट हुए। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कभी क्या होता है कि हमें इंग्लिश तो आती है बट हम को जब किसी से बात करते हैं ना तब उस समय नर्वस फील करते हैं, अरे कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। बट जब मेरे पास पहला प्रोजेक्ट ऐसा आया था जो पूरे टोटली इंग्लिश में थे, मैं नर्वस हो रही थी, अरे मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसा सोच रही थी। तो फिर मुझे मेरे टीएल ने मोटिवेट किया कि आप तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सही हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ काम किया और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था और मेरे को इतना अच्छा लग गया उस प्रोजेक्ट में कि वहाँ पे मैं टॉप गिगर भी बन गई और प्रोजेक्ट भी अच्छा था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और गिग इंडिया के अंदर यही है कि जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो काफ़ी नए प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सीखने के साथ आपकी स्किल्स भी इम्प्रूवमेंट होती है, अच्छी अर्निंग होती है, टाइम टू टाइम सैलरी, कोई प्रेशर नहीं काम का, कोई हेडेक नहीं कि मुझे काम करना ही करना है। कभी मुझे किसी ने भी प्रेशर नहीं दिया कि इतना करना है। आप प्रॉब्लम में है तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझती है। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। काम तो होते रहता है बट एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड है तो वो डेफिनेटली खुद ही से काम अच्छा करेगा, बट वो जब खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्टिव है, काफ़ी बातों को समझते हैं, काफ़ी चीज़ मैंने सीखी है। और गिग इंडिया के अंदर बेसिकली देखा जाए तो मैं अभी तक अगर देखा जाए कोविड में अगर हमें 5-6 हज़ार का भी जॉब मिलता है तो हमें वहाँ 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं। गिग के अंदर हम 7 से 8 आवर्स दे के अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 15-20 के प्लस ही होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी तक 3
lakhs का पैकेज अचीव किया जो मेरे स्टडी में काम करेगा। बेसिकली मैं जॉब तो अपनी स्टडी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक एम है और उसे मुझे कंप्लीट करना है, और मैं 100% श्योर हूँ कि इस चीज़ में मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट गिग इंडिया कर रहा है, ताकि क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, मैं अच्छी सैलरी अर्निंग कर पा रही हूँ। तो मैं लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि वो गिग में आए और गिग के साथ काम करें, क्योंकि गिग से बेस्ट फिर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, और ना मैं यहाँ से कहीं जाने वाली, मैं गिग में ही कंटिन्यू करूँगी क्योंकि आफ्टर मैरिड भी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ काम के साथ, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है, कभी किसी काम को लेके प्रेशर नहीं है, काम भी अच्छे से करती हूँ और हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जिस भी प्रोजेक्ट में जाऊँ वहाँ पे भी टॉप गिगर रहूँ, और कंटिन्यू ये हुआ भी है, और कंटिन्यू मैं ये कोशिश कर भी रही हूँ कि जिस भी प्रोजेक्ट में गई हूँ वहाँ भी ऐसा ही मेरा परफॉर्मेंस रहे, ताकि मुझे अच्छा लगता है और उसके साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, और दैट्स इट। काफ़ी खुशी होती है गिग के साथ काम करके, कभी कोई प्रेशर नहीं, कभी कोई टेंशन नहीं। तो मैं हमेशा गिग इंडिया के साथ ही काम करना चाहूँगी और लोगों को भी यही बोलूँगी कि गिग के साथ ही ज्वाइन करो। थैंक यू। So as you all heard, she was Hi. Asha Kumari, and now we will hear from Sarat Kumar, who is one another gigger who is working on the platform. हाय, आज हमारे साथ एक ऐसे गिगर है जो हमारे साथ 1 साल से एसोसिएटेड है और उनका नाम है शरद कुमार। शरद, आई वेलकम यू टू आवर शो एंड सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, आपकी एज कितनी है, और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी मैम। मेरा नाम शरद कुमार है, मेरा एज 26 इयर्स है और मैं बेसिकली तमिलनाडु से हूँ बट लिविंग इन लखनऊ में। मैम हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में लखनऊ से मैंने किया है। लखनऊ में एफिलिएटेड टू बीकॉम मैंने किया है फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड एमबीए किया है एफिलिएटेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हाँ मैम, एक्चुअली हमें प्लेसमेंट हुआ था कंपनी का नागपुर से, बट ड्यू टू सम इशू, फैमिली इशू, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उनको टाइम के लिए रिक्वेस्ट किया था कि 1 महीने का टाइम बढ़ाने के लिए, उन्हें वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। उसके बाद इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, नहीं कंपनी प्लेसमेंट हुआ था हमारा वहाँ से, बट इसी चक्कर में ज्वाइन नहीं कर पाया। तो जब आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसके बाद आपने क्या किया, आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? उसके बाद फिर मैं बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स का तैयारी कर रहा था मैं, बैंकिंग रेलवे, एंड उसके बाद मैंने एक कंपनी में काम भी किया है फॉर 5 मंथ्स ऐसे ऑफिसर ऑनलाइन सेल्स फॉर 5 मंथ्स मैम। देन आफ्टर गिग इंडिया मैंने ज्वाइन किया। प्रोसेस लखनऊ में जो प्रोसेस था वो बंद हो गया आफ्टर 5 मंथ्स। अच्छा। शट डाउन कर दिया गया, प्रोसेस शट डाउन कर दिया गया है। तो उसके बाद आफ्टर विदिन 2 मंथ्स फ्रॉम बैंगलोर गिग इंडिया से मैम ने कॉल किया था इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद फिर रोहित सर थे, रोहित सर से मीटिंग हुआ, उन्हीं ने हमें प्रोजेक्ट में करवाया और रोहित सर बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने स्टार्टिंग कराया हमें। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपने क्या क्या सीखा? ट्रेनिंग में मैम मतलब प्रोजेक्ट का रिलेटेड में, जैसे जो प्रोजेक्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें उन लोग ने हमें सर ने ट्रेनिंग दिया था कैसे कैसे काम करना है और क्या किस प्रोसेस में काम करना है, कैसे ऐप में सबमिट करना है रिपोर्ट्स वगैरह, तो वो सब सीखे हैं मैम, उसमें एक्सपीरियंस मिला है। अच्छा, और ये कितने टाइम तक हुई आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग मैम वो अराउंड 10 to 15 डेज ट्रेनिंग, 10 डेज ट्रेनिंग हुआ मैम। मैम फर्स्ट जब कस्टमर जब कॉल करे थोड़ा सा नर्वस रहते हैं कि कैसे वो करना है, कि फर्स्ट कॉलिंग है इस प्रोजेक्ट का, तो नर्वस थे थोड़ा सा। उसके बाद फिर थोड़ा के उनसे टारगेट मतलब उनको टारगेट कंप्लीट करना है कि थोड़ा मन में किया, तो थोड़ा धीमे धीमे करके सेट हो गया मैम इस पे, बट फर्स्ट कॉल में नर्वसनेस बहुत था। अच्छा, तो अब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो पहले से? यस मैम, आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है मैम। बहुत अच्छे। सो जैसे अगर मैं बात करूँ आपका डेली काम का, तो डेली लेवल पे आप कितने घंटे डिवोट करते हो इस काम के लिए? मैम कम से कम मैं 7 to 8 आवर्स में निकाल लेता हूँ मैम, फ्रॉम मॉर्निंग 10 to इवनिंग 7 PM। वेरी नाइस। और आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है इससे? यस मैम, वेरी गुड अर्निंग मैम। सो
ओके सरत, गिग इंडिया में काम करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? मैम एक्चुअली इसमें इनकम हमारे इनकम बहुत अच्छा हो रहा है। हम अपना कोई नीड जो भी होता है, नीड हम अपना फुलफिल कर पा रहे हैं और किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। फुलफिल हमारा इसमें अच्छा एक्सपीरियंस भी हमको मिल रहा है और अच्छा इनकम भी हो रहा है। इससे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, अपना जो भी पर्सनल नीड्स है हम पूरा कर पाते हैं मैम। बहुत अच्छा है। और फ्यूचर सेविंग में भी अच्छा काम आता है मैम। ओके सो सरत, आप कितने सेटिस्फाइड हो गिग इंडिया के साथ काम करके? मैम फुली सेटिस्फाइड है मैम, क्योंकि आजकल के मैम कोरोना केसेस में, कोरोना के टाइम में भी, कोविड के टाइम में भी आजकल जॉब जो लोग का है वो भी आपको जॉब कहते हैं रिमूव किया जा रहा है लोगों का कंपनियों से। बट यहाँ पे गिग इंडिया ने इस टाइम में बहुत हेल्पफुल किया है और सबको बहुत अच्छा जॉब भी प्रोवाइड किया गया है और अच्छा इनकम भी इसमें होता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें वर्क फ्रॉम होम है। या इससे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा देता है, दे रहा है गिग इंडिया। सो आपके हिसाब से घर से काम करने के क्या क्या फायदे हैं? घर से हम एक तो हमें टाइम का बचत रहता है, जैसे जाना आने का टाइम जो रहता है वो बचत है मैम। और उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम है तो इससे हमें एक तो नए नए वर्क फ्रॉम होम से नए नए सीखने को भी मिल रहा है घर से रह के, और इनकम भी अच्छा हो रहा है इस पे। ये इसमें बेनिफिट्स है मैम। मैम मेरा तो मैम यही मैसेज होगा कि जिसको भी ज्वाइन करना है गिग इंडिया बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पे। और वर्क फ्रॉम होम है तो इसमें बड़ा हम तो सबको रिकमेंड करेंगे कि इसमें गिग इंडिया में ज्वाइन करने की, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स होती है इनका गिग इंडिया में, और डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है और हाई इनकम है और वर्क फ्रॉम होम है। तो मैं रिकमेंड सभी को भी करूंगा कि गिग इंडिया में सब ज्वाइन करें। थैंक यू सरत फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। और मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात कर कर। आई एम प्रीटी श्योर जिसने भी ये वीडियो देखा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुनकर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आई होप आप हमारे साथ एसोसिएटेड रहे और लंबे टाइम के लिए। और या थैंक यू सो मच। So I hope most of the questions, most of the doubts which you guys must be having would have been cleared by these two folks also. They are our existing giggers. They are working on the platform. They always say that the kind of experience they have, they feel very secure with us. They feel that they are getting trained and everything. So those kind of things really help people to grow. So we wish everybody, I'm expecting all of you also to start. If you are looking for any kind of gig, give it a try, think about it, and please come on the platform. So guys, आप लोगों को लग रहा होगा कि these are people you do not know. I mean, these are people who are there who've recorded their videos about gig and they're doing well with gig. We also in our Jamaat have about 20 people across India who are actually working on gig, in fact with Gig India itself. Out of them, we have two people with us today on the panel, Nirali and Shaheen. Nirali is from Hyderabad, Shaheen is from Gujarat. So we've called them so that they also can share their experience live with you. So I will invite Nirali and Shaheen and Samir, if you can, have a conversation with these girls about their experience and everything, that'll be extremely helpful. So Samir, Shaheen and Nirali, over to you guys. So hi Shaheen, how long have you been working with Gig India? It's been 6 months. 6 months, okay. Yeah. Which company are you currently working with, Shaheen? Upstocks. Okay, and what is the kind of role you have to play there? What is the gig exactly? Yeah, it's about sales executive. My position is as a sales executive. So what is the day-to-day activity? What do you do actually as a sales executive? So we have to call the people, like leads are almost interested. So just we have to convert them as a customer. So we have to make them open the account, Demat account. Yeah. Okay. So for everybody's understanding, Upstocks is one of the fastest growing and one of the leading stock brokerage firm. If you guys are active on television also, you would have noticed ads, multiple ads coming from Upstocks, right? So it's easy to open your Demat account and all. Those are ads, but to enable them on ground, Shaheen is one of the sales executives who are representing Upstocks to their customers. She encourages people, she talks to them, she understands their problem, she
provides the understanding about the platform and help them convert. So thank you, Shaheen, for that. And Shaheen, would you like to help me understand before joining Gig India, what were you doing and how did Gig India help you? I was studying at that time, and being a fresher, it was very difficult for me to get a job at that time. But then I found about the company called Gig India, and it was very like a great opportunity for me to join that, because it is short and easy task job for part-timers and freelancers, full-timers. So I think that is a great opportunity for students also. If like in most of the companies, they want experience, but Gig India is not like that. They encourages people to join even if you are not that much experienced, because I'm personally I was a fresher at that time. I told you I was a student. It was a great opportunity for me to join and learn. All right. So Shaheen, was there any training program for you, or you straight away got the project after being selected? No, there was a training. There was a training. After that, I cleared certification at first attempt only, because it was not that difficult. It was easy to clear that. And after that, within a week, I was working. It was fast and clear. So it has been more than 6 months, 9 months for you, right, Shaheen? Would you like to share any experience like while working on the day, if any tough day at work, कस्टमर से बात करने में प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ वैसा, कुछ भी एक्सपीरियंस आपका जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्यों टफ है, ये आसान था, सब कुछ आसानी से हो गया या फिर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुआ कभी किसी कस्टमर के साथ? लाइक सेल्स इतना इजी नहीं होता पहले तो, मतलब वो सेल्स इतना इजी नहीं होता, वो कन्वर्ट करना इट्स डिफिकल्ट, बट few customers are like seriously they want to open the account and like they are genuinely interested, so उसमें हमको demotivated feel नहीं होता, लेकिन कभी कभी हाँ there are some tough days but not always, and हमको work pressure भी नहीं होता कि हाँ हमको इतना टारगेट कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, and timing भी flexible होता है, so we can work accordingly. So सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता है ना, when you work on sales, right, so your job is to convince people, the customers, right, to purchase the product for a company, right? इस प्रोसेस में क्या होता है, कई बार चीजें टफ होती हैं, लाइक सेल्स इज नॉट इजी, बट देन व्हेन यू कीप डूइंग इजी थिंग्स यू डू नॉट लर्न आल्सो. सो आई एम श्योर कि शाहीन ने स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में उसको काफी सारी चीजें टफ लगती होंगी, बट नाउ सिंस शी हैज एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली इन दिस डोमेन, प्रोबेबली अब उसको वो चैलेंजिंग काम ज्यादा नहीं लगता होगा. लाइक इन अ डे अगर वो अभी 100 कॉल करती होगी तो 80 कॉल्स में भी उसको आसान लगते होंगे, 20 टफ लगते होंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता होगा, पहले ज्यादा टफ होते होंगे, कम इजी होते होंगे. So I hope I'm right, Shaheen? Yes, exactly so. Yeah. So and so for everybody's understanding, this is the way you grow, right? You get so हमारे साइड से कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है, whatever flexible time she wants to follow she can, but जितना ज़्यादा परफॉर्म करेगी शाहीन, she would be able to earn more and more, right? So this is how you grow in your career. Okay. So thank you, Shaheen. Thank you for your time. It was nice talking to you. We also have one of your friend, Nirali, with us, right? So thank you, Nirali, for being with us here. I would like to hear the same thing from you also. Which project you are working? Just tell for everybody's understanding. Yeah. So hello everyone. Yale Madar. Nirali here. I work for Upstocks, as Shaheen said. I also work for Upstocks. Okay. And the same role there also? Shaheen? Same role, telesales executive. Telesales executive. Good. How are you liking it? Like, are you liking the work? Yes, it's actually flexible enough. You just have to onboard the customers who are interested. People are interested to open the account with Upstocks. So our role is just to onboard them, to help them out with the process of account opening. So Nirali, आपको कैसे पता चला Gig India के बारे में? Yeah, so actually I was searching for a job and then I came through this application and then I registered and and then. So where did you see about Gig India? Internet पे मिला या आपकी community से शबनम ने guide किया आपको? No, from the community only I came to know about this. Okay. So did they actually help you out in opening your account on Gig India app? कुछ बताया हो starting में?
हाँ, yes, I got it through the community only. Full support, सब उनका help किया, उन्होंने सब help किया. Okay. So good. So actually, you guys are all, for everybody else. You guys are lucky. You have people like Shalina, Shabnam, who are actually helping you out very closely. Many of people in industry, what happens? People might not be aware of. So इतनी सारी चीजें हैं ना internet पे, people are lost. So इतने content है, इतनी companies है, इतने jobs है, people even get confused कि कहाँ पे apply करना है, कैसे apply करना है, and that is where you lose out on opportunity. But you guys are lucky, you have your mentors there at organization in your community. I am really glad to say this. That's why we are interacting with you guys. So Nirali, tell me one thing. Has there been a situation anywhere like you आप फंस गए हो और Gig India ने help नहीं किया हो, ऐसा कुछ feedback कुछ भी हमारे लिए? Never. Always they are always cooperative. कैसे काम आएगा ये experience? How do you feel this is going to help you in career? Yes. It's I'm improving a lot. Communication skills से लेके everything, लोगों के साथ interact करना, सब कुछ. It's helping a lot. So and financially कैसे help किया है Nirali? You were a college going student, like just graduated, right? Yes, I was just a fresher looking for a job, and Gig India, like ऐसा लगता नहीं है that work from home job है, so you will earn a good amount of salary. But yes, Gig India has helped me out a lot. So many of people on our platform says कि they were looking for job, they were not getting job, or they lost their job due to pandemic. Some of them say that they were doing job with big corporates also, big MNCs, but because of some kind of family situation, family emergency, they had to quit their job. Like कुछ कभी शादी हो गई किसी की, या फिर कभी कभी ऐसा होता है उसको फ्यूचर के लिए हायर स्टडीज के लिए जाना है. They want to take a cooling period, a break from the corporate job. That is where Gig India comes in handy. You can try out Gig India. You can work on it, and many of people, once they come on the platform, they find it for long-term solution. So लोग आते short term के लिए है, but then at the end of the day, it becomes a long-term solution for them, because they start thinking कि चलो मैं start कर लेता हूँ, अभी कुछ नहीं है मेरे पास, so let's do this and see how it works. But eventually they find it so flexible. I am looking forward to have you on the platform. Once you get onboarded, we'll have more words. I'm glad that you are having good experience with Gig India. So I'm looking forward to have more and more people from the community. Shalina, please help me get those people also. We would like to help. If anybody wants any kind of help from Gig India, we are always ready to help. So while in case we have any questions, I think let them trickle in. Thank you so much, Samir. Once again, pass on our heartfelt thanks to Sahil that despite everything else, he still did come in for the earlier session. And thank you, Samir, for stepping in. Sahil gave a very great perspective about the gig economy, what kind of gigs are available. He spoke about other platforms, and obviously Gig India, we've had great experience so far, and hopefully we'll get more and more people start their earning, the ones who really require it. And also give us your feedback. We are trying best to kind of meet the requirements of our people, of our Jamaat, and we'll keep getting better. Thank you once again to Gig India team, and thank you everyone for joining. Have a good Sunday ahead. With that, we'll close this webinar. Thanks a lot, and yeah, Alimadar.